सो हेलो एवरीवन। सो अब तक हमने जो कि लेंसेज चैप्टर के हमने 15 एमसीक्यूज अब तक देख लिए थे। सो नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट एमसीक्यू दैट इज एमसीक्यू नंबर 16। और आज के इसमें हम जो लेंसेज चैप्टर के 50 एमसीक्यूज हम आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एमसीक्यू नंबर 16. So up to this MCQ, as we have completed in the last part of this video, so आगे जो है that is MCQ number 16. So that it is spectacles for the myopia use. Options are convex lens, option B is concave lens, C is cylindrical lens, and D is the plane mirror. So आप बता सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का लाइव चैट में. Then we will discuss that what will be the correct answer of this question and why the answer is correct of that particular question. तो आप जल्दी से बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा. Yes, so the correct answer for this question will be here. That is the question is spectacles for the myopia use. Convex lens, concave lens, cylindrical lens या फिर plane mirror. So इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो यहाँ पर होगा that will be the option B, that is the concave lens. So as we have seen that about the myopia and hypermetropia, that these are the two types of the defects which can be cleared or which can be cured with the help of the different types of the lenses as we used in the spectacles. So for the correctness of this disease, that is of the myopia, so we are using the concave lenses in the spectacles. So correct answer for this question will be here, that is the option B, concave lens. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज एमसीक्यू नंबर 17. सो स्पेक्टेकल्स फॉर द हाइपरमेट्रोपिया यूज. सो ऑप्शन से कॉन्केव लेंस, ऑप्शन बी इज कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन सी इज प्लेन लेंस एंड ऑप्शन डी इज मिरर. Yes, so the correct answer that is for this MCQ number 17, that is spectacles of the hypermetropia use. सो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस. सो जैसा कि मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया कि जो मायोपिया होता है, सो वी आर यूजिंग द कॉन्केव लेंस फॉर इट्स करेक्टनेस. और जो हाइपरमेट्रोपिया होता है, सो उसके लिए हम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर यूज करते हैं इन द स्पेक्टैकल्स. So next question, that is question number 18, that is image formed by the convex lens at the infinity is at. So image formed by the convex lens at the infinity, यानी convex lens से image infinity पे form होने के लिए हमें object को वहाँ पर कौन से पोजीशन पे प्लेस करना पड़ेगा. So ऑप्शन से infinity,
option B is focus, option C is 2f, and option D is the optical center. So as we have discussed about this when we are studying about the lenses chapter, so जिसके इसमें हमने अलग अलग जो भी कॉन्वेक्स लेंस के यूज से जो अलग अलग रे डायग्राम्स वगैरह फॉर्म होते हैं, सो वी हैव डिस्कस अबाउट ऑल दैट in the lectures of this lenses chapter. So from that you can answer to this question that image formed by the convex lens at the infinity is at. So object will be placed at what position? So उसकी जो image है वो convex lens की at infinity form होगी. Yes, so the correct answer जो होगा इस question का that will be the option B, that is the focus. So when an object is placed at the focus, so it will be at the focus. So option B is the correct answer for this question number 18. So बढ़ते हैं next question की ओर, that is MCQ number 19. So when the object is at the focus of convex lens, image is. So जब object यहाँ पर focus पर होगा convex lens के, so image कहाँ पर form होगी? So option है आपके सामने, option A is at infinity, option B is at the focus, option C is between the f and the 2f, and option D is at the 2f. सो जैसा कि अभी मैंने आपको जो कि क्वेश्चन नंबर 18 था, सो उसका ही सिमिलर मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है यहाँ पर, दैट इज द एमसीक्यू नंबर 19. सो जब भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर फोकस पर प्लेस किया जाता है, सो इमेज यहाँ पर फॉर्म होती है बाय द कॉन्वेक्स लेंस. सो जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे हम प्लेस करते हैं, सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द infinity. So here the correct answer for this question will be the option A, that is at infinity. So next question, that is MCQ 20. So the formula for the power of the lens is, so option A, that is P is equals to F, option B is P is equals to 1 by F, option C is P is equals to F square, and option D is P is equals to F by 2. So that's what will be the correct answer of this question. Yes, so correct answer जो होगा, that is the formula for the power of the lens is, that is P is equals to 1 by F. So that is the focal length, P is equals to 1 by F focal length, जिसे हम मेजर करते हैं in the unit, that is मीटर. And पावर का जो यूनिट होता है, that is denoted by the capital D, which is the diopter. So next question, that is MCQ 21. The image formed by the concave lens is always. So options are real, then virtual, then inverted,
and D is the magnified. यस, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? आप बता सकते हैं लाइव चैट में। यस, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन बी, विच इज द वर्चुअल। सो इमेज जो भी फॉर्म होती है कॉनकेव लेंस से, वो ऑलवेज यहाँ पर वर्चुअल होती है। और अलग अलग जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिचुएशंस जो कि अलग अलग हमने इमेजेस देखी, जैसे कि रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, मैग्नीफाइड हो गया। सो दिस टाइप ऑफ द काइंड ऑफ द इमेजेस जो हमें दिखाई देती है, सो इट इज विद द कॉन्वेक्स लेंसेज। लेकिन कॉनकेव लेंस में जो भी इमेज फॉर्म्ड होती है, जो भी हमें दिखाई देती है, सो इट इज बेसिकली मोस्टली that is the virtual. So बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज एमसीक्यू 22। A lens with the high power has option A is that is large focal length, option B is small focal length, option C is zero focal length, and option D is infinite focal length. So you can answer what will be the correct option of this question in the live chat. Yes, so इस क्वेश्चन का दैट इज द लेंस विद द हाई पावर हैज। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, सो इट विल बी द ऑप्शन बी, दैट इज द स्मॉल फोकल लेंथ। सो जैसा कि हमने यहाँ पर पावर का जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पर स्टडी किया था, कि जो भी यहाँ पर पावर ऑफ द लेंस जो भी हम यहाँ पर लिखते हैं कि पावर इज इक्वल्स टू दैट इज 1 अपॉन दैट इज द फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ यहाँ पर जब हम यहाँ पर स्मॉल फोकल लेंथ की अगर हम बात करें, सो इट विल बी द इनवर्स रिलेशन इट विद द पावर। सो यहाँ पर जो है पावर ज्यादा होगी, जिसकी फोकल लेंथ लेंस की कम होगी। सो वही क्वेश्चन हमें यहाँ पर पूछा गया है कि लेंस विद द हाई पावर की जो लेंस होती है, सो उसके लिए हमें यहाँ पर स्मॉल फोकल लेंथ होनी चाहिए, तभी हमें लेंस की जो पावर है वो हाई मिल सकती है। So that will be the that key focal length will be here small for this answer of the question, and that this focal length is measured the unit that it is the in the meter. So focal length here it is measured in the meter, and the power of the lens is the diopter, जिसके बारे में हमने पहले भी यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर बताया in the previous question. So moving forward with the next MCQ, that is MCQ 23, which lens can form a real image? So ऑप्शन है आपके सामने, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन, या फिर बोथ। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, सो विच लेंस कैन फॉर्म अ रियल इमेज। सो हमें ऐसे लेंस के बारे में बताना है कि जो रियल इमेज फॉर्म करती है। सो जैसा कि मैंने अभी पिछला जो क्वेश्चन था, दैट इज दिस क्वेश्चन MCQ 21, कि द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज। सो कॉन्केव लेंस हमेशा, इस क्वेश्चन का जो आंसर था दैट इज ऑफ द वर्चुअल। सो कॉन्केव लेंस हमेशा हमेशा जो इमेज बनाती है दैट इज वर्चुअल। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं,
दैट इज MCQ 23 कि ऐसी कौन सी लेंस है जो रियल इमेज बनाती है. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी हियर ऑप्शन बी, दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस. सो कॉन्केव लेंस जो होती है वो वर्चुअल इमेज बनाती है, और कॉन्वेक्स लेंस जो होती है दैट इज फॉर्म एज द रियल इमेज. So let's move forward with the MCQ 24. That is, the unit of the focal length in the lens formula is. So options A meter, diopter, second, and Newton. Yes, so the correct answer जो भी होगा इस क्वेश्चन का, so that it will be the, that is option A मीटर. So यहाँ पर जो यूनिट पूछा गया है, the unit of the focal length in the lens formula, that is मीटर. So लेंस फॉर्मूला हमारे पास था, that is 1 upon V minus 1 upon U is equals to 1 upon F. So that is 1 upon V, 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F. So this was the lens formula in which the focal length is in the meter. So the correct answer for this question here will be the meter. So next is the MCQ 25. So the optical center of the lens is the point where ray stops, reflects, passes undeviated, bends more. Yes, so the correct answer for this question will be कि ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर जो रे होती है दैट इट passes द अनडिविएटेड. सो हियर द करेक्ट आंसर it will be the passes undeviated, option C. यस, सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि MCQ 26 है. So the convex lens can form virtual image when the object is beyond 2f, at f, between f and lens, at infinity. So आप बता सकते हैं what will be the correct answer कि convex lens can form the virtual image when the object is at. यानी कि जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि कॉन्केव लेंस इज फॉर्मिंग द वर्चुअल इमेज ऑलवेज, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस जो होती है वो रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाती है, लेकिन
At most of the cases, it is forming the real image, but in some cases, that is when the object position is changed, so it leads to the formation of the virtual image. So वो ऐसी कौन सी पोजीशन है ऑब्जेक्ट की कि जहां पर रखने के बाद जो कॉन्वेक्स लेंस है that it is forming the virtual image of that object. So options is beyond 2f, at f, between f and lens, at infinity. So correct option will be that is option C, that is between f and the lens. यानी जब फोकस और लेंस के बीच में जब ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाएगा इन द फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, so that leads to the formation of the virtual image of that object. So the correct answer for this question will be MCQ 26, that is the option C, between f and the lens. So बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. So next question is that is 27, concave lens is used in. So options A, camera, projector, spectacles for myopia, and magnifying glass. Yes, so concave lens is used in. So correct answer for this question will be here, that is option C, जो कि है spectacles for the myopia. और हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम जो यूज करते हैं दैट कॉन्वेक्स लेंसेस. नेक्स्ट इज द MCQ 28. सो 28 नंबर का MCQ है, द पावर ऑफ द कॉन्केव लेंस इज. सो ऑप्शन है पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो या फिर इनफाइनाइट. सो आप बता सकते हैं व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द लाइव चैट. सो जो पावर है होती है कॉन्केव लेंस की, सो इट इज व्हाट, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो या फिर इनफाइनाइट. यस, सो यहाँ पर लाइव चैट में दिया है आंसर, दैट इज ऑप्शन सी. सो लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, सो इट विल बी द ऑप्शन बी, दैट इज द निगेटिव. सो ऐसा क्यों है कि निगेटिव क्यों है? सो पावर ऑफ द लेंस जो कि फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल्स टू दैट इज 1/f विच इज द फोकल लेंथ. सो अगर हम जब बात करें कि कॉन्केव लेंस की, सो कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है दैट इट इज द निगेटिव. कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है दैट इट इज निगेटिव, एंड ड्यू टू विच द पावर ऑफ दिस लेंस इज कम्स टू बी द निगेटिव. सो यहाँ पर फोकल लेंथ निगेटिव होने की वजह से यहाँ पर जो पावर ऑफ द लेंस निकल के आती है, सो दैट इट ऑल्सो कम्स आउट टू बी द निगेटिव हियर. यस, सो ड्यू टू विच दैट इज द ऑप्शन बी, दैट इज निगेटिव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज MCQ 29. सो द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज. सो कॉन्वेक्स लेंस की पावर यहाँ पर क्या होगी? निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो या फिर इनफाइनाइट. सो यू कैन आंसर द करेक्ट ऑप्शन इन द लाइव चैट. सो द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो या फिर इनफाइनाइट. यस, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, दैट इज द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव. सो दैट इज द ऑप्शन बी. जैसा कि हमने देखा था कि कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव होने की वजह से यहाँ पर जो पावर ऑफ द कॉन्केव लेंस है वो यहाँ पर निगेटिव आ रही थी. सो यहाँ पर पूछा गया है लेकिन कॉन्वेक्स लेंस के लिए, सो कॉन्वेक्स लेंस पावर हियर इट कम्स आउट टू बी द पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव फोकल लेंथ.
Yes, so moving forward with the next question, that is MCQ 30. The lens formula is. So लेंस फॉर्मूला हमें यहाँ पर पूछा गया है. सो ऑप्शन है आपके सामने 1/f = 1/v+1/u. Option B is f is equals to u plus v. Option C is 1/f is equals to u by v. And option D is f is equals to ub. So in this formula, that is one of the correction is there. That is the lens formula is. So here it will be the minus sign. 1 minute. So here it will be the minus sign. So that is 1 upon v minus 1 upon u is equals to 1 by f. So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन ए. सो लेंस फॉर्मूला will be that is 1 upon v 1 upon v minus 1 upon u is equals to 1 upon f. So that is the option A. Let's move forward with the MCQ 31. So if the focal length is 0.5 meter, so power is 0.5 diopter, 2 diopter, -2 diopter या फिर -0.5 diopter. सो मेनी ऑफ द टाइम्स मतलब बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं जहाँ पर इट इज कंफ्यूजिंग रिगार्डिंग कि यहाँ पर जो पॉजिटिव भी ऑप्शन है और नेगेटिव भी ऑप्शन है. सो यहाँ पर मेनी ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि आंसर तो करेक्ट निकालते हैं लेकिन जो ऑप्शन होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव केस में कंफ्यूज होने की वजह से वो गलत हो जाता है. सो लेकिन यहाँ पर हमें दिया गया है कि हमें जो मेन फोकस रखना है कि फोकल लेंथ हमें यहाँ पर जो मीटर में दी गई है वेदर इट इज गिवन एज अ पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंडिंग ऑन दैट सो पावर ऑफ द लेंस विल बी हियर कैलकुलेटेड. लेकिन कुछ कुछ बार हमें यहाँ पर फोकल लेंथ दी जाती है लेकिन लेंस भी मेंशन किया जाता है कि फॉर इट इज फॉर द कॉनकेव लेंस और वेदर इट इज फॉर द कॉन्वेक्स लेंस. सो जैसा कि यहाँ पर जो है पावर यहाँ पर पॉजिटिव फोकल लेंथ यहाँ पर जो पॉजिटिव में दी गई है दैट इज 0.5 मीटर. सो जैसा कि हमने पावर का जो फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ा था so that is the power is equals to here that is 1 upon focal length. So that is power is equals to 1 upon focal length. So अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें और इसे अगर सॉल्व करें so it will be the 1 upon 0.5. So it comes out to be that is so ये यहाँ पर क्या होगा अगर हम इसे सॉल्व करें so it comes out to be the 2. So 2 here it will be the positive because यहाँ पर जो फोकल लेंथ दी गई है so it is as is the positive. लेकिन बट इट इज स्टिल कंफ्यूजिंग दैट कि मतलब ये निगेटिव भी आंसर यहाँ पर हो सकता है. सो इन दिस क्वेश्चन देर इज वन मिस्टेक दैट इट शुड विद द मेंशन दैट व्हाट विल बी द टाइप ऑफ द लेंस इट इज. सो फोकल लेंथ यहाँ पर अगर पॉजिटिव दी गई है सो इट विल बी द +2 दैट इज द 2 डायप्टर. लेकिन यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स लेंस ऐसा स्पेसिफाइड आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा. So here the power will be that is the +2 diopter. अगर यहाँ पर पूछा गया होता कि focal length of the concave lens या फिर convex lens, so depending on that, so answer will be changed as it comes out to be the -2 diopter depending on the type of the lens which is mentioned in the question. So बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर.
सो MCQ 32 है यहाँ पर कि इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस बियॉन्ड 2f इज. सो ऑप्शन से आपके सामने वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ऑप्शन बी इज रियल एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन सी इज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड एंड ऑप्शन डी इज रियल एंड इरेक्ट. So what will be the correct answer of this question? You can answer in the live chat. Live chat. यस, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो होगा, सो दैट इट विल बी द बियॉन्ड टू एफ जो इमेज यहाँ पर फॉर्म होती है, सो दैट इट इज रियल एंड द इन्वर्टेड. सो कॉन्वेक्स लेंस में जब भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर प्लेस करते हैं बियॉन्ड द टू एफ, सो इमेज जो फॉर्म होती है दैट इज इट इज ऑफ द टाइप दैट इज रियल एंड द इन्वर्टेड. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हियर विल बी द ऑप्शन बी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज MCQ 33. द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इज. सो यहाँ पर पूछा गया है बेसिकली व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, दैट इज V बाई यू, U बाई V, F बाई U, U बाई F. यस, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इट विल बी दैट इज V बाय U, ऑप्शन ए. सो जैसा कि अगर हम बात करें कि मैग्निफिकेशन का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस V बाय U, दैट इज मैग्निफिकेशन यहाँ पर जो होता है मैग्निफिकेशन M इज इक्वल्स टू माइनस V बाय U. So correct answer here will be the option A, that is V by U. So moving forward with next question, and if the question comes in the exam, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए अगर पूछा जाता है, सो वी हैव टू कंसीडर जो भी हमने यहाँ पर साइन कन्वेंशन पढ़ा था लेंस के हिसाब से. सो अकॉर्डिंग टू दैट कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें पॉजिटिव लेना है, इमेज का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें इमेज डिस्टेंस हमें पॉजिटिव निगेटिव लेना है. सो इट ऑल डिपेंड्स on the type of the lens which is used, and according to the sign convention we can use the signs for that particular object distance and image distance in the formula. So next जो है that is MCQ 34 कि the image formed by the concave lens is smaller, larger, same size या फिर inverted. यस, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा कि MCQ 34 का द इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव लेंस. सो कॉनकेव लेंस से जो इमेज यहाँ पर फॉर्म होती है दैट इट इज द स्मॉलर. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हियर विल बी द ऑप्शन ए, दैट इज स्मॉलर. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज MCQ 35. विच लेंस इज थिकर एट द सेंटर, concave lens, convex lens
प्लेन या फिर सिलेंड्रिकल। सो आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर लाइव चैट में कि विच लेंस इज थिकर एट द सेंटर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स, प्लेन या फिर सिलेंड्रिकल। यस, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा कि विच लेंस इज थिकर एट द सेंटर, सो इट विल बी द ऑप्शन बी एज द कॉन्वेक्स लेंस। सो इट विल बी ऑप्शन बी कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें, सो कॉन्वेक्स लेंस इट इज फॉर्म्ड एज इट इज शोन इन द, it is puffed outwards and it is thicker at the center side. So correct answer here will be the option B, that is convex lens. So बढ़ते हैं next question की ओर, that is MCQ 36, which lens is thinner at the center? Obviously कि अभी हमने जो बात की कि थिकर जो होती है सो कॉन्वेक्स लेंस, so thinner will be here, that is the option B, concave lens. So for this 36 question the correct answer will be here option B, that is the concave lens. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज एमसीक्यू 37, अ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस। यस, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कि कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन, सो इट विल बी द ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। जैसा कि हमने माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के जो एप्लीकेशंस है उसके बारे में हमने क्लास 9th में यहाँ पर स्टडी किया था। सो वी आर बेसिकली यूजिंग द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस in the microscope and the telescope as for the creating a pointed image, and we have also seen that the convex lens is used in the camera. So correct answer that a convex lens is used in, so it will be used in the all of this, that is microscope, telescope and camera. So due to which the correct answer for this question will be option D, that is all of these. So बढ़ते हैं next question की ओर, that is MCQ 38, which lens is used in the spectacles to correct the hypermetropia? सो जैसा कि हमने दो यहाँ पर तीन टाइप के जो डिफेक्ट्स है दैट इज ऑकर्ड ड्यू टू द इम्प्रिंटिंग ऑफ द इमेज, जो कि मतलब यहाँ पर रेटिना पर फॉर्म होनी चाहिए, वो वहाँ पर करेक्ट पोजीशन पे फॉर्म नहीं होती। सो जिसकी वजह से हम तीन टाइप के जो आई डिफेक्ट्स है जो हमें यहाँ पर ऑब्जर्व होते हैं, फर्स्ट इज द मायोपिया, सेकंड जो है वो हाइपरमेट्रोपिया, और थर्ड इज द प्रेसबायोपिया। सो फॉर द करेक्टनेस ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया, यहाँ पर जो लेंस यहाँ पर हम यूज करते हैं, सो फॉर इट्स करेक्टनेस, सो इट इज द कॉन्वेक्स लेंस। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बी करेक्ट होगा। और जो मायोपिया, मायोपिया के लिए जो हम लेंस यहाँ पर यूज करते हैं, सो दैट इज द कॉन्केव लेंस, एंड प्रेस बायोपिया वी आर यूजिंग द बाइफोकल lenses फॉर इट्स करेक्टनेस। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज एमसीक्यू 39, the image formed by the convex lens between the f and the 2f is option A virtual, option B is erect, option C is real and inverted, and option D is virtual and inverted. So image formed by the convex lens between the f and the 2f. So many of the times board in the board exam
ये इस तरह के क्वेश्चंस जो भी है, जैसा कि एक ऑब्जेक्ट कहीं तो भी प्लेस किया होगा इन बिटवीन सम, एज वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट पोजीशंस इन द रे डायग्राम्स, कि ऑब्जेक्ट एट द फोकस प्लेस किया होगा बिटवीन एफ एंड टू एफ, देन बियॉन्ड एफ, बियॉन्ड टू एफ, एट इंफिनिटी। सो दिस ऑल पोजीशंस जो कि चार्ट आपके टेक्स्ट बुक में वहां पर दिया गया है, सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट इन द बोर्ड एग्जाम द क्वेश्चन definitely one MCQ will be asked from that. So do remember that table, so you can able to solve all the questions related with that table in the board exam. सो जैसा कि हमने यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन अलग अलग जो भी देखे हमने, कि उसमें यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के बारे में कभी पूछा गया है, सब कभी कॉनकेव लेंस के बारे में पूछा गया है, कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस किया गया है, सो इमेज का फॉर्म होगी और इमेज का टाइप कैसे होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, रियल इन्वर्टेड होगा, so that it may be asked in the board exam in the 2026 year also. So इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो होगा, सो इट विल बी द रियल एंड द इन्वर्टेड. So option C, that is real and inverted, is the correct answer of this question. So तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, that is 40 MCQ. So MCQ number 40 is, the focal length of the plane glass slab is, option A is 0, option B is infinite, option C positive, and option D is the negative. सो यहाँ पर जो फोकल लेंथ की बात की गई है प्लेन ग्लास स्लैब की. सो सपोज इफ वी आर टेकिंग दिस प्लेन ग्लास स्लैब हियर, सपोज दिस इज द प्लेन ग्लास स्लैब. सो फोकल लेंथ हम जब इसकी देखेंगे, सो इट विल नॉट एट पर्टिकुलर वन प्लेस, so it will be at the infinite position. So it is assumed that the focal length of the plane glass slab is at the infinite distance. सो इसके बारे में जो एक्सपेरिमेंट है, सो जो कि हमने एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर जो कि हमने देखा था, कि एक पेपर पे एक प्लेन ग्लास स्लैब को रखा गया था, एंड वी हैव अटैच द पिंस एट डिफरेंट पोजीशंस इन द पेपर, एंड वी हैव सीन at what positions their image occurred, and from that we have studied that the focal length of the plane glass slab is at the infinite distance. So MCQ 41 is, the ray parallel to the principal axis passing through optical center principal focus 2f at या फिर infinity. यस, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमने अलग अलग रूल्स जो भी स्टडी किए थे, फ्रॉम दैट ओनली द वन रूल विच इज आस्क्ड हियर, कि द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन बी, इज द प्रिंसिपल फोकस. यानी कि जो रे है, दैट इज विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट पासेस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सो MCQ 42 इज, द साइन कन्वेंशन फॉर फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस इज. सो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, कि पावर जो है वो डिपेंड करेगी फोकल लेंथ पे, फोकल लेंथ निगेटिव है या पॉजिटिव है. सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ डिपेंड करेगी. यानी ये डिपेंडेंसी की जो कंडीशन है, कि पावर का जो यूनिट है, वेदर इट विल बी द पॉजिटिव इन द डायोप्टर और वेदर इट विल बी द निगेटिव, कि पावर का जो पॉजिटिव निगेटिवनेस है वो डिपेंड करेगा यहाँ पर, कि फोकल लेंथ उसकी कौन सी है, पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है. एंड फोकल लेंथ विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द लेंस, कि लेंस का टाइप कौन सा है, कॉनकेव लेंस है या फिर
कॉन्वेक्स लेंस है. So these are the three basically conditions which we are taking into the consideration while doing the sign conventions. कि पावर का जो यूनिट है वो क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव, दैट डिपेंड्स ऑन द फोकल लेंथ. फोकल लेंथ का अगर पॉजिटिव निगेटिव कौन सा है, सो दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द लेंस विच फॉर विच वी आर चेकिंग द साइन कन्वेंशन. सो यहाँ पर पूछा गया है कि साइन कन्वेंशन फॉर द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस के बारे में हमें यहाँ पर पूछा गया है. सो वेदर इट विल बी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, एंड ऑप्शन डी इज एनी. यस. सो अगर हमने पहले भी देखा कि कॉनकेव लेंस जो होती है, सो उसका फोकल लेंथ निगेटिव होती है. सो फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की अगर निगेटिव है, सो इट्स पावर विल बी आल्सो इन द निगेटिव. सो दैट विल इट विल बी द, अगर हम पावर इसकी कैलकुलेट करें, सपोज वी हैव आस्क्ड फॉर द पावर ऑफ दिस focal length of the concave lens, so it comes out to be the negative in the diopter. So, which lens used in the magnifying glass? Concave lens, convex lens, plane mirror, plane या फिर mirror? The type of the lens used in the magnifying glass. यस. सो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का, सो दैट इट विल बी द कॉन्वेक्स लेंस. सो विच लेंस इज यूज्ड इन द मैग्नीफाइंग ग्लास, सो इट इज द कॉन्वेक्स लेंस. सो कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज की जाती है मैग्नीफाइंग ग्लास के इसमें, सो बिकॉज एज वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्वेक्स लेंसेज, कि कॉन्वेक्स लेंस क्या करती है, इट इज द कन्वर्जिंग लेंस, जो कि कन्वर्ज करती है लाइट रेस को, एंड इन द मैग्नीफाइंग ग्लास वी ट्राई टू कन्वर्ज द लाइट रेस एट द सिंगल पॉइंट. सो करेक्ट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो होगा, सो इट विल बी द ऑप्शन बी, दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस. मूविंग फॉरवर्ड विद द MCQ 44. सो द मैग्निफिकेशन ऑफ द कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, इक्वल टू वन, या फिर इनफाइनाइट. यस. सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, सो दैट इट विल बी द ऑप्शन बी, दैट इज लेस देन वन. सो मैग्निफिकेशन ऑफ द कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज लेस देन वन. क्योंकि ऐसा क्यों है, बिकॉज जो कि हमने फॉर्मूला यहाँ पर स्टडी किया था, एम इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यहाँ पर यू. सो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कॉन्केव लेंस के इसमें अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस वगैरह की वैल्यू अगर पुट करें, सो इट कम्स आउट टू बी द इन द नेगेटिव, विच इज द ऑब्वियसली दैट इज इट इज लेस देन द वन. So due to which that here the answer for this question number 44 will be option B, that is less than 1. So बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज MCQ 45. विच लेंस कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज? ऐसी कौन सी लेंस है जो रियल इमेज यहाँ पर फॉर्म नहीं करती? सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, सो दैट विल बी द ऑप्शन बी, दैट इज द कॉन्केव लेंस, जिसके बारे में हमने पहले भी देखा कि कॉन्केव लेंस जो होती है, सो इट ऑलवेज फॉर्म्स द वर्चुअल इमेज. वो कभी भी रियल इमेज यहाँ पर फॉर्म नहीं करती. सो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का, दैट विल बी द ऑप्शन बी, दैट इज द कॉन्केव लेंस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दैट इज MCQ 46. सो फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज मेजर्ड फ्रॉम, ऑप्शन ए ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्शन बी इज सरफेस, ऑप्शन सी इज एज, एंड ऑप्शन डी इज एट एनी पॉइंट. सो आप बता सकते हैं कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर लाइव चैट में, कि फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज मेजर्ड फ्रॉम.
यस, सो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज एमसीक्यू 46, सो इट विल बी द ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज ऑप्शन ए। जैसा कि हमने देखा था कि फोकल लेंथ कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस की लो या फिर कॉन्केव लेंस की लो, वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर की जाती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी हियर, दैट इज ऑप्शन ए। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज एमसीक्यू 47। द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव लेंस इज रियल, वर्चुअल, रियल समटाइम्स या फिर इन्वर्टेड। सो नेचर यहाँ पर पूछा गया है कॉन्केव लेंस का। सो कॉन्केव लेंस का जो नेचर यहाँ पर होगा, सो दैट इट विल बी द ऑप्शन बी, वर्चुअल। सो इमेज जो भी फॉर्म होती है बाय द कॉन्केव लेंस, सो दैट इट इज द वर्चुअल ऑलवेज। So option B is the correct answer of this question. Next is the MCQ 48. Which of the following reactions involves? Uh, so it is of the another chapter that we have seen this question. So let see the MCQ number 49. Which lens is used to correct the myopia? Convex lens, concave lens, cylindrical lens या फिर bifocal lens? जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया का, ये बार बार रिपीट होता है बिकॉज इट हैज बीन आस्क्ड इन द मेनी ऑफ द टाइम्स इन द बोर्ड एग्जाम फॉर मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया एंड द प्रेसबायोपिया। सो मायोपिया को यहाँ पर करेक्ट करने के लिए जो लेंस यूज होगी, दैट इज द ऑप्शन बी, दैट इज द कॉन्केव लेंस। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हियर विल बी द ऑप्शन बी, कॉन्केव लेंस। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, दैट इज MCQ 50। विच लेंस इज यूज टू करेक्ट द हाइपरमेट्रोपिया? सो हाइपरमेट्रोपिया के करेक्टनेस के लिए, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि यहाँ पर जो लेंस यूज होगी, सो इट इज द कॉन्वेक्स लेंस। सो आपको ध्यान में रखना है कि मायोपिया के लिए जो यूज होगी, सो इट इज द कॉन्केव लेंस, एंड फॉर द हाइपरमेट्रोपिया वी आर यूजिंग द इट इज द कॉन्वेक्स लेंसेज। So we have done with the all the 50 MCQs here of this chapter, that is of the lenses. So next we will be starting with the MCQ of the next chapter, जो कि chapter number 8 है, that is of the metallurgy. So metallurgy के भी हम 50 MCQs इसी तरीके से यहाँ पर solve करेंगे. We will discuss here only. So I hope you enjoyed this video, and if you like the content and the MCQs, so do definitely like to this video. Also subscribe to this channel and share with your friends, so that they will also get the benefit from this, as they will be also helpful. These videos will also be helpful for them for the preparation of the board exam. So still if you have any doubts regarding, सो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, अगर आपके कुछ डाउट्स वगैरह होंगे इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर जो भी कंटेंट अभी तक प्रोवाइड किया गया है रिलेटेड विद द साइंस वन एंड ऑल। सो आप कमेंट बॉक्स में आपके जो डाउट्स है वो डाल सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू ऑल।